a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Modi says, "I am sure that we will talk with an open mind and our discussions will be constructive." PM Modi called for reforms in global institutions, called for collective action against terrorism and radicalization. The IMD predicted landfall in Odisha with 120 km/h wind speed. The storm will bring heavy rainfall to several Odisha and West Bengal districts in the next 3 days. Priyanka has always been someone who would sacrifice anything for her family and friends, says Rahul Gandhi. Prime Minister Narendra Modi, while addressing the ongoing 16th BRICS Summit's limited plenary session today, has stated that India supports diplomacy and dialogue, not war. He declared, and I'm quoting, "We support dialogue and diplomacy, not war. And just as we were able to overcome a challenge like COVID together, we are certainly able to create new opportunities to ensure a secure, strong and a prosperous future for our future generations." Unquote. That is what Prime Minister Modi stated. According to Modi, in order to combat terrorism and terror financing, the member nations of BRICS must work together with resolve and unity. There is, of course, no room for doubt and double standards on such serious global issues. The leaders of the member nations must actively take steps to prevent radicalization among the youth of our countries. There is also a need to work together on the pending issue of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations as well. Watch this report.
Prime Minister Modi is currently attending the 16th BRICS Summit in Kazan, where he took part in both narrow as well as expanded format meetings. He is also scheduled to hold a key bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping today. This will be the first formal meeting between the two leaders in 5 years and also comes just 2 days after India said it reached a truce with China to resume patrolling in the disputed areas along the line of actual control, or the LAC, in eastern Ladakh region, ending a 4-year military standoff. In his recent speech, Prime Minister Modi has highlighted global challenges such as inflation, food security and cyber threats. This is what he said, and I'm going to quote him here. Preventing inflation and ensuring food and energy security, health security and water security are matters of priority for all the countries in the world. This is what he has stated, viewers. He called on the BRICS partners to raise their voices collectively for reforms in all the global institutions. Watch this. जब बात होती है तो उसमें भारत सामने आता है और भारत का जो अपना डॉक्ट्रीन है, जो अपना सिद्धांत है, वो शांति के साथ आगे बढ़ने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये मुलाकात जो है, द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसको इसी लाइट में देखा जाएगा। हालांकि जो दो देशों के रिश्ते होते हैं उनमें तमाम सारे और भी चीजें होती हैं, व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई। तो ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो द्विपक्षीय बातचीत की हैं। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ में द्विपक्षीय बातचीत, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि इजरायल के साथ में जिस तरह का एक तनाव ईरान के साथ में चल रहा है, और अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि भारत की ओर दरअसल एक जो शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जब बात होती है तो उसमें भारत सामने आता है। और भारत का जो अपना डॉक्ट्रीन है, जो अपना सिद्धांत है, वो शांति के साथ आगे बढ़ने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये मुलाकात जो है, द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसको इसी लाइट में देखा जाएगा। हालांकि जो दो देशों के रिश्ते होते हैं उनमें तमाम सारे और भी चीजें होती हैं, व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई। तो ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो द्विपक्षीय बातचीत की हैं। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के According to Prime Minister Modi, the BRICS member nations need to move forward promptly
for reforms in global institutions such as the United Nations Security Council, the multilateral development banks, and the World Trade Organization or the WTO. While advancing BRICS efforts, the member nations must also ensure that this organization does not create an image of being the one to replace global institutions, rather than reform them. During this important event, PM Modi stated that countries must work towards global regulations for cybersecurity along with safe and secure artificial intelligence. He stated, and I quote, "In this age, in this era of technology, new challenges such as cybersecurity, deep fakes and disinformation have also emerged. And there are high expectations for the BRICS in this context." Unquote. Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping have held their first bilateral meeting in 5 years on Wednesday on the sidelines of the BRICS summit in Russia. The meeting comes hours after India and China agreed to restore the patrolling rights to each in the Depsang Plains and the Demchok region, thereby marking a significant headway in efforts to resolve the military standoff along the line of actual control in the region of eastern Ladakh. Viewers, the two leaders met for an informal summit in Mahabalipuram in October of 2019, months before the Chinese incursions in eastern Ladakh that triggered a military standoff along the line of actual control. They did have pull-aside meetings in Bali, which happened in 2022, and then Johannesburg in 2023, which was last year. But the Wednesday meeting is the first formal and the proper structured bilateral meeting between the two. Watch this report.
Viewers, hours after China, without even mentioning the agreement on patrolling along the line of actual control, confirmed that it had quote-unquote reached a solution and would quote-unquote work with India to effectively implement the plan. India announced Tuesday that Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping would hold a bilateral meeting on Wednesday, which is today, on the sidelines of the BRICS summit in Kazan, which is the capital of Tatarstan in Russia. This is going to be the first bilateral meeting, viewers, between these two leaders in 5 years. They met for an informal summit in Mahabalipuram back in October of 2019, months before the Chinese incursions in eastern Ladakh that triggered a major military standoff along the LAC, or the line of actual control. They did have the other pull-aside meetings, one which took place in 2022 in Bali and other one which took place last year in Johannesburg. But the meeting today is going to be the first proper and a structured bilateral meeting. Foreign Secretary Vikram Misri, briefing the meeting and the media in Kazan, has stated, and I'm quoting him, "I can confirm that there will be a formal bilateral meeting between Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping today on the sidelines of the BRICS summit," unquote. दोनों नेताओं के बीच Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. 分歧，相互成就。 China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. Excellency, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। 祝贺峰会成功召开。
感谢普京总统及东道主俄罗斯的周到安排和热情接待。我相信，在大家共同努力下，这次会晤将为大金砖合作指明方向，为全球南方团结合作掀开新篇章。当前，世界进入新的动荡变革期，面临关键抉择：是任由世界动荡不安，还是推动其重回和平发展的正道？我想到俄罗斯作家车尔尼雪夫斯基的著作《怎么办》，书中的主人公的坚强意志和奋斗激情，正是当前我们所需要的精神力量。时代的风浪越大，我们也要勇立潮头，以坚韧不拔之志，敢为人先之勇，识变应变之谋，共同谱写大金砖合作高质量发展的新篇章。我们要建设和平金砖，做共同安全的维护者。人类是不可分割的安全共同体，只有践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出一条普遍安全之路。乌克兰危机还 Shifting focus now to the Indian political spectrum, Maharashtra Congress President Nana Patole has stated that the Congress and the NCP, which is the Sharad Pawar faction, and the Shiv Sena of the UBT have agreed to contest 85 seats each in the upcoming elections. He mentioned that discussions would be held regarding the remaining 18 seats with the alliance partners, including the Samajwadi Party, and that these details would be finalized by the following day. He has also expressed his confidence that they would contest the elections as the Maha Vikas Aghadi and would then successfully form the government. Take a look. अत्यंत तुम्हाला कोणाला जरी असं पोटात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या, यांचं काय होत आहे, काय नाही होत आहे, काय होणार आहे का, नाही होणार आहे का, त्यांना सांगा सगळं सुरळीत पार पडलेलं. काँग्रेसची अधिकृत यादी आम्ही नानाजी काँग्रेसची यादी आपल्या देखील छोट्या पक्षांमध्ये सोबत असल्या त्यांना देखील आपले उमेदवार जाहीर केले. सपा असेल किंवा शेतकरी कामगार प्रत्येक पक्ष आपापल्या भूमिका घेऊन पुढे जात असतो, पण शेवटी आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये एकत्र आहोत आणि चर्चा सुरू आहे. डिटेल आपको हम देंगे. आज UBT Shiv Sena's leader Anand Dubey has expressed his confidence now that the Maha Vikas Aghadi led government would return to power in Maharashtra. He mentioned that the top leaders of the three alliance parties are now conducting regular meetings to discuss the issue of seat sharing. He added that details on how many seats each party will contest would be revealed in just a few hours. जो फलदायी पेड़ होता है ना, फलदायी पेड़, जिस पेड़ में बहुत सारे फल लगे होते हैं, वहां पर किसान और मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा संख्या में रहते हैं, क्योंकि फल है ना. अब महायुति में कहाँ भगदड़ है, कहाँ वहां दिक्कत है, क्योंकि महायुति जब विपक्ष में बैठने वाली है तो न वहां बैठकें हो रही हैं और न तो वहां कोई मनमुटाव है. मनमुटाव भी वहीं होता है, नोकझोंक भी वहीं होती है जहां स्वस्थ संख्या होती है. सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है. ठीक है, हर पार्टी चाहती कुछ सीटें हम ज्यादा लड़ लें, कुछ सीटें हम ज्यादा लड़ लें, कुछ मित्र पक्ष भी चाहते हैं कि हम लड़ लें. इसी में समय लग रहा है. रोज बैठकें चल रही हैं, रोज 7 से 8 घंटे 10 घंटे तीनों ही पार्टी के शीर्ष नेता बैठकर बातचीत कर रहे हैं. कल भी आपने देखा कि बहुत देर तक बैठक चली, आज भी बैठकों का दौर शुरू है. हमें पूरा विश्वास है कि
कुछ घंटों में इसका निर्णय हो जाएगा। कौन कहां से लड़ने वाला है, कितनी सीटों पर लड़ने वाला है, कैसे हमारी रणनीति होगी, कैसे चुनाव प्रचार होगा, क्या हमारा मैनिफेस्टो होगा, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, ये सब थोड़े ही घंटों की बात है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि जहां पर सरकार आने की स्थिति होती है, जो जिताऊ सीट होती है, जैसे कमाऊ पूत के बारे में आपने सुना होगा, तो एक जिताऊ सीट होती है। तो जहां जिताऊ सीट होती है वहीं पर तो थोड़ा नोकझोंक होगा। अब जहां पर एकदम रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ा है, वहां पर आप क्या करेंगे? इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी चंद घंटों में अपनी रणनीति लेकर आपके सामने आएगी और आपके माध्यम से ही राज्य और देश की जनता। Samajwadi Party leader Fakhrul Hasan Chand has alleged that the Bharatiya Janata Party does the politics of hatred and division, viewers. Now the people of the country have understood every trick of the BJP. People want development, they want employment, they want to get rid of inflation. The public is no longer going to fall into any trap of the Bharatiya Janata Party. That's what he has said. Watch this report. जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ नोटिस लगाएंगे, उनके घरों को पूछेंगे कि वो लीगल बने या इलीगल बने। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी वो नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को समझ चुकी है। देश की जनता वो विकास चाहती है, वो रोजगार चाहती है, महंगाई से छुटकारा चाहती है। वो पीडीए बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। वो भाजपा के किसी झांसे में आने वाला नहीं है। ये एक चिंताजनक विषय है। जो विषय दिल्ली का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां का है, जो हर बार प्रदूषण बढ़ता है। समाजवादी पार्टी समझती कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए कि किसानों को भी समस्या ना हो, प्रदूषण भी ना हो। हर साल जब ठंड बढ़ती है ये समस्या विकराल रूप ले लेती है, लोगों के स्वास्थ्य पे बड़ा असर पड़ता है। इसका रास्ता कोई निश्चित रूप से देश की सरकार को और राज्यों की सरकार को निकालना चाहिए, समाजवादी पार्टी समझती। Viewers, it's time to wrap up the prime time with me, but before we do that, it's time to take a look at the headlines once again. During the bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Modi says, "I am sure that we will talk with an open mind and our discussions will be constructive." PM Modi calls for reforms in the global institutions, called for collective action against terrorism and radicalization. The IMD has predicted landfall in Odisha with 120 km/h wind speed. The storm will bring heavy rainfall to several Odisha and West Bengal districts in the next 3 days. Rahul Gandhi says Priyanka has always been someone who would sacrifice anything for her family and friends. Viewers, that calls for the wrap on this special edition of Prime Time with me, Anukriti Sharma. I shall catch up with all of you once again tomorrow at 7 p.m. sharp. Until then, keep watching CVR English for more news and updates.